અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ખાતે કોંગ્રેસ પાર્ટી દ્વારા જોરદાર દેખાવ કરવામાં આવ્યો। કોંગ્રેસ વિરુદ્ધ પક્ષના નેતા શહેજાદ ખાન પઠાણ કોર્પોરેટરો તેમજ કાર્યકર્તાઓએ વિરોધ કર્યો હતો, તો મહિલા કાર્યકરો પણ વિરોધમાં જોડાઈ હતી અને ભ્રષ્ટાચાર રોડ રસ્તામાં ફસાયો, હવે સ્મશાનના લાકડામાં દેખાયોના પોસ્ટરો સાથે વિરોધ કરવામાં આવ્યો। स्मशान में भी भ्रष्टाचार नहीं चलेगा ना नारा साथे कार्यकरोए विरोध कर्यो हतो। लाकड़ा पोस्टर्स साथे कांग्रेसना कार्यकरो विरोधमां जोडाया हता। भ्रष्टाचार की ऐसी हद पार तो आज तक अहमदाबाद म्युनिसिपल दी है, तब हम लकड़े भी ना दे पाए। मैं मानता हूं कि ये स्मशान गृह में घटना बनी है खूब ज दुखदायक और अंते पीड़ादायक है। स्मशान जो मौतनो मलाजो ना जड़वाय, ज्यां महादेवनो वास होय ने त्यां पण जो आटलो ऊंडो भ्रष्टाचार करवामां आवे, भारतीय जनता पार्टी ने अने अधिकारीओनी मिलीभगतथी जाणे भ्रष्टाचारनी नानामां नानी वात होय के मोटा मोटी वात होय, एने ए लोकोने एक आदत पड़ी गई है। जनताना पैसे अने जनताने गमे तेटલું दुख पड़े तो पण एमना पेटनुं पाणी हलतुं नथी, तेमनी निर्लज्जता साबित थाय छे। आज 3 महीना पहला वाड़ स्मशान गृहનો मुद्दो આવ્યો હતો। 2020 में काम शुरू करवामां हतुं, रिनोवेशनना कामने 2 वर्षनी अंदर पूर्ण करवानुं हतुं, छतां पण आजे पण 2025 में पण 5 वर्ष थये पण काम पूर्ण करवामां આવ્યું નથી અને એની જગ્યાએ એ લોકો એને બ્લેકલિસ્ટ કે કોઈ પણ નોટિસ આપ્યા વગર ફરીથી એને કામગીરી શરૂ કરીને નવા ટેન્ડરો ઊભા કરીને અને નવી કામની મુદતો આપીને આ એક પ્રકારનો સુવ્યવસ્થિત ભ્રષ્ટાચાર છે। આ વિષય ગંભીર અને સેન્સિટિવ છે, કોઈને પણ સહેજે આવરી લેવામાં આવે નહીં। જે પણ આમાં કસૂરવાર હશે એની સામે કડકમાં કડક પગલાં લેવામાં આવશે। નોટિસ આપી છે, કાર્યવાહી ચાલુ છે અને ભારેમાં ભારે પેનલ્ટી કરી અને જે કસૂરવાર કોન્ટ્રાક્ટર હશે તો એમને પણ બ્લેકલિસ્ટ કરવામાં આવશે અને જે કોઈ અધિકારી પણ એમાં સંકળાયેલા હશે તો એમની સામે પણ કાર્યવાહી शिक्षात्मक કરવામાં આવશે। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसका वार्षिक बजट 15,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का है, स्मार्ट सिटी का टैग दिया जाता है, सड़कों का मामला हो, हाटकेश्वर ब्रिज जैसा मामला हो कि बरसाती पानी में भ्रष्टाचार का मामला हो, ये बात तो सामान्य हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये है कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भारतीय जनता पार्टी के राज में भ्रष्टाचार शमशान के लकड़ों तक भी आ गया है। बहुत बड़ी शर्मनाक घटना परसों ओढव विस्तार में घटी। एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसका परिवार अंतिम संस्कार करने के लिए ओढव शमशान गृह में जाता है। उस समय वहां पर अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़े नहीं थे। 4 घंटे तक परिवार ने अंतिम संस्कार के लिए वहां पर इंतजार किया। अंतिम में उस परिवार ने मजबूरी में टायर लाकर, बिस्तर की गोदड़ी लाकर उनके परिवार के व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर देना पड़ा।